ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम ओम।
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Good morning. The day of Sadguru, the day of Jupiter. And today Baba has raised our intoxication that we have the omens of Jupiter over us. The omens of Jupiter is called auspicious. And we have received the Master. Now we are having the omens of Jupiter. And no storms or other omens can stay in front of us. And Baba's remembrance will save us. Secondly, have the intoxication that we are godly students and God is teaching us. And where are you all sitting? Where are you all sitting? You are all sitting in Godly University. Baba says, sweet children, always maintain the intoxication that God is teaching you. Listen with this intoxication that God is teaching you. This Murli is the knowledge of the Gita. Each and every version is of God's and I am listening to it. So have this intoxication. The student life of yours is the best. You have the omens of Jupiter over you. Question. Which children receive a lot of love from everyone? Everyone wish to have true love, but it is of spiritual love. Which children will receive? Answer. Those who become instruments to benefit many. Those who benefit others would be told, "You are my mother." Baba says, those who benefit others would be told, "You are my mother." So check yourself to see to how many you bring benefit, to how many souls do you give the Father's message. The Father is the messenger. You children also have to give the Father's message. You are the children of the messenger. You children have to give the Father's message. Tell everyone that they have two fathers. Remember the unlimited Father and the inheritance. Yesterday Baba said Alpha and Beta. Today Baba once again reminds us, remember the unlimited Father and the inheritance.
song, You're the Ocean of Love. Om Shanti. The spiritual father sits here and explains to you children every day. Children, sit here in soul consciousness. It should not be that your intellects continue to wander outside. You have to remember the one Father alone. He alone is the ocean of knowledge and the ocean of love. It is said, even one drop of knowledge is enough. The Father says, sweetest children, remember the spiritual Father, and you will receive your inheritance. You will then go to the land of immortality, to paradise. However, you now have to remove the burdens of sin that are on your heads. Everything is explained to you children systematically and logically. The one who was the highest of all is now doing tapasya down below at the end. Only the one Father teaches you the tapasya of Raj Yoga. Hatha Yoga is completely different. That is limited and this is unlimited. That is the path of isolation and this is the family path. The Father says, you were the masters of the world, as were the king and queen, so were the subjects. There were the pure deities of the family path, and they then went on to the path of sin. There are images of that too. They make such dirty images that you would be ashamed even to look at them. Their intellects are completely finished. The praise of the Father is, you are the ocean of love. It cannot be a drop of love. It refers to this knowledge. You recognize the Father and come here to claim your inheritance. You recognize the Father and come here to claim your inheritance. The Father only gives you knowledge for salvation. You listen to just a little and you receive salvation. From here, you children have to go to the new world. You know that you become the masters of paradise. At this time, there is the kingdom of Ravan over the whole world. The Father has come to give you the kingdom of the world. All of you were the masters of the world. There are pictures of that even now.
However, it isn't a matter of hundreds of thousands of years. That is wrong. Only the Father is said to be constantly righteous. The whole world becomes righteous through the Father. It is now unrighteous. Your children are now claiming your inheritance from the Father. However, it is also fixed in the drama that those who listen to this knowledge and became amazed by listening to it, then related it to others. But they then also ran away. Oh Maya, you're so powerful that you turned them away from the Father. Why would she not be powerful? Why would she not be powerful? Since she has ruled this kingdom for half a cycle. Even in this world, nobody will leave their seat and position instantly. You know now what Ravan is. Here too, some children are sensible and some are senseless. You know that you now have the omens of Jupiter over you. This is why you make effort to go to heaven. Those who are dying do not make effort to go to heaven. People simply say, for the sake of saying, that so and so has gone to heaven. You know that you are truly making effort to go to heaven. That is, you are making effort to become the masters of heaven. No one else would say that they are going to heaven. They would say, what are you saying? They will shed the body and the others will say that he has gone to heaven, and therefore they think that what they are saying. So when we Brahma Kumaris used to say, people used to laugh. People tell you limited things. Whereas the Father tells you unlimited things. Your children have to make a lot of effort. You should have a lot of intoxication. Whoever made effort in the previous cycle and whoever claimed a status will do so again. You have been made to conquer Maya many times. Then you were also defeated by her. This drama is also predestined. Therefore, your children should be very happy. What happiness you should have? That you have to go to the land of immortality from the land of death. Student life is the best.
At this time, your life is the best life. No human beings know this. One is you have the happiness, that it is the student life. And secondly, God Himself comes and teaches you. This is the best student life. It is souls that study, and then it is said, this one's name is so and so. It is the soul that is a teacher. It is souls that listen and imbibe. It is souls that listen. But because they have body consciousness, they don't understand. In the golden age, you would also understand that you as soul have received that body and that you have now reached old age. You would quickly have a vision that you have now shed that old costume and will take a new one. The example of the buzzing moth is also about the present time. You now know that your Brahmin teachers according to the drama, you buzz this knowledge to whoever comes to you. Then among them too, some are weak and they decay. Sannyasis cannot give this example. They would not make others the same as themselves. You have an aim and objective. This is the story of the true Narayan, the story of immortality. All of those stories are yours. Only the one Father tells you the truth. All the rest are false. In the world, people relay the story of the true Narayan. That is not knowledge. They only speak about the significance of Narayan there and then distribute prasad. There is such a vast difference between those limited things and these unlimited things. The Father is giving you directions. You note them down. You all have the diary with you, isn't it? However, all the books and scriptures will be destroyed. None of the old things will remain. People think that 40,000 years of the Iron Age still remain. And this is why they continue to build huge buildings and spend money. Will the ocean leave anything alone? Will the ocean leave anything alone? It will swallow everything up with one tidal wave. And many are having the question as to why there are so much of
And this place will be the place to do tapasya for you children. They say that Pandavas melted in the mountains. This all belongs to now. Bombay didn't exist previously and it will not remain. Look at all the things that have emerged in the last 100 years. Earlier, the Viceroy used to travel in a 4-horse carriage. Look what has happened in the last few years. Heaven is very small. Your palaces will be by the river banks. Now once again Baba is raising your intoxication. There are now the omens of Jupiter of you children. You children should have the happiness that you are becoming so wealthy. When someone goes bankrupt, there are said to be bad omens over him. You are now happy with the omens over you. You are now happy with the omens over you. God the Father is teaching you. God the Father is teaching you, and therefore this is the thing of happiness. Would God be teaching anyone? You children know you are godly students. We are becoming Narayan from ordinary men. We are becoming the masters of the world. We came here and then became trapped in the kingdom of Ravan. We will now go to the land of happiness. You are Brahmins of the confluence age. Establishment takes place through Brahma. There wouldn't be just one, there would be many. You have one more intoxication. You have become God's helpers. God is doing the service of establishing heaven, and you help Him do that. You all help in Baba's task, isn't it? Those who help Him the most will receive a higher status. No one can starve to death. You help Baba so much. And therefore, you will not starve to death. Here, when the government people investigated the beggars, they found that they had thousands of rupees. No one can starve to death. Here too you belong to the Father. Although a father may be poor, he too would not eat anything until his children had something to eat. He will first feed the children and then he would eat. Because children are the heirs,
In Calcutta, it happened so. Dadi was also there. Dadi said, I will not eat first, but all the Sevadaris will first finish with their breakfast. The father would not eat anything until his children had something to eat, because children are the heirs. He has a love for them. There is no question of anyone being poor. They have plenty of food. There is unlimited wealth there. Look at their way of dressing. It is so beautiful. The costume the kings and the queens wear there will be worn only once, and the next day it will be given to the maids and servants to wear. This is why Baba says, when you have time, go and sit in front of the picture of Lakshmi and Narayan. You can also sit in front of it at night. Go to sleep while looking at the picture of Lakshmi and Narayan. Oh, Baba is making us become like them. Practice this and see how much you enjoy yourself. Then wake up in the morning and share your experience. Everyone should have the pictures of Lakshmi and Narayan and the ladder. You students know who is teaching you. There is this picture too. Everything depends on how you study. You will become the masters of heaven. But your status depends on how you study. Baba says, make this effort. I am a soul, not a body. I am a soul, not a body. I am claiming my inheritance from Baba. There is no difficulty in this. It is very easy for the mothers. Men go to their businesses. Men's intellect is diverted to many things. But mothers can easily remember the father. You can do a lot of service using the picture of the same and objective. You will benefit many and they will only love you a lot. They would say, you are our mother. You mothers have become instruments to benefit the world. Check yourselves to see how many you bring benefit to. To how many did you give the Father's message? The Father is the messenger. No one else would be called the messenger. The Father is giving you a message that you then have to give to others.
Remember the unlimited Father and the inheritance. Also remember the cycle of 84 births. You are the children of the Father, the messenger, and you give everyone the message. Tell everyone that they have two fathers. The unlimited Father gave you the inheritance of happiness and peace. We were in the land of happiness, and all the rest were in the land of peace. We went into liberation in life. We now have to return home. And we will then become the masters of the world there. There is a song, Baba, we receive the sovereignty of the world from you. The earth, sea and sky are all in our hands. At this time, we are claiming our unlimited inheritance from the Father. You are incognito warriors, the Shiv Shakti army. This is the sword of knowledge and the arrows of knowledge. Those people have shown goddesses with physical weapons. There are so many temples on the path of devotion. There are so many pictures. This is why the Father says, you used up all of that wealth on the path of devotion. When you go to the temples, all the priests in the temples will say that you have to offer something to the temple. You have to offer something in front of the idols. Everybody has used up all of that wealth on the path of devotion. All of them are going to be destroyed. All will be drowned. You have been given visions of how you will bring diamonds and jewels from the mines, because they will all be buried at this time. When there will be earthquakes, everything will come out. Great kings have treasure stores underground. All of them will be buried. Then your craftsmen will bring them up again. No generations will come to know that the wealth was buried here. They hide many things. They hide many things inside the walls. From where will so much wealth come from? Baba says you can see a model scene of heaven in Ajmer. Baba has also told you to make a museum similar to that. You should create a first-class model of heaven. You children know that you are now establishing your own kingdom. Previously you didn't know anything.
You now continue to learn everything. It isn't that I know what is inside each one. Jani Jananhar doesn't mean that he knows what is inside each one. Baba says, I know the beginning of the world, the end and the middle of the world cycle. Even some vicious ones used to come here. They were asked, why have you come here? They will come to the center. Only then they will be able to absolve sins. They would reply, only when I come here can I become free from the vices. I am a very sinful soul. And they will say that we want to experience from the Father and therefore we come to the centers. The Father would say, okay, may you benefit. Maya is very powerful. The Father says, children, you have to conquer those vices because only then will you become conquerors of the world. Maya is no less. You are now making effort and becoming like Lakshmi and Narayan. No one else can have the beauty they have. That is a natural beauty. Heaven is established every 5,000 years. And you then go around the cycle of 84 births. You can write, this is a university cum hospital. One is for health and the other is for wealth. Health, wealth and happiness. Come and attain health, wealth and happiness for 21 births. Businessmen also put up their own boards. They even put up boards outside their homes. Only those who have this intoxication would write these things. Explain to anyone who comes. You claimed your inheritance from the unlimited Father and you then took 84 births and became impure. Now become pure. Consider yourselves to be souls. Remember the Father. Baba also does the same. Baba also did the same effort. He is the number one effort maker. Brahma Baba is the number one effort maker. Some children write, Baba, storms come. This happens. I write back, all the storms come to me first. Baba is the engine. Only when I first become experienced can I then explain to you about them. They are Maya's business. Maya will definitely do its work. The Father now says, sweet beloved children, you now have the omens of Jupiter over you. You don't need anyone to show you your horoscope. Baba tells you everything. There you have long lifespans,
Krishna is also called Yogeshwar. Yogeshwar taught him yoga, and so he became that. No human being or sannyasis can be called Yogeshwar. Ishwar, God, is teaching you yoga. And this is why the names Yogeshwar and Yogeshwari are given. It is at this time that you are also Gyaneshwar and Gyaneshwari. You will then go and become Raj Rajeshwari. Acha. To the sweetest, beloved, long lost, I now found children, love, remembrance, and good morning from the Mother, Father, Bab, Dada. The spiritual father says, Namaste to the spiritual children. Essence for Dharana. First point. Make effort while keeping your aim and objective in front of you. Look at the picture of Lakshmi and Narayan in front of you and talk to yourself, Oh Baba, you are making me become like them. We now have the omens of Jupiter over us. Second point. In order to make others the same as yourself, continue to buzz knowledge like a buzzing moth. Become a helper of God and help the Father establish heaven. Become a helper of God and help the Father establish heaven. You have to open hospital cum university from which you will get health, wealth and happiness. Blessing. May you experience God's love by being detached from body consciousness and seated on a lotus seat. A lotus seat is a symbol of the elevated stage of Brahmin souls. Souls who are seated on such a lotus seat automatically remain detached from body consciousness. The consciousness of bodies does not attract them. While walking and moving around, Father Brahma was constantly aware of either the angelic form or the deity form. Let you always have such a stage of natural soul consciousness. This is known as being detached from unconsciousness of your body. Those who remain detached from any consciousness of their bodies in this way are loved by God. Slogan. Your specialities and virtues are Prabhu Prasad. To think that they belong to you is to have body consciousness. With Avyakta silence,
experience the double light angelic stage. If you love Father Brahma, then become an angel like Father Brahma. Let your angelic form of light be constantly visible in front of you. This is what I have to become. Then let your future form also be visible. Let go of your present form and adopt that form. Now have such an experience. It will then be understood that you are close to perfection. Today is the day of Sadguru. We will offer bhog to Baba. Today there is no trance messenger. Sister Pravina and Sister Gopi will offer bhog to Baba, and we will also offer bhog to Baba. The collective meditation in the evening will be in the conference hall. Today is Brother Mohan Singh's 79th birthday. And the birthday celebration will take place in Vishwa Kalyani Bhavan at 10:30 a.m. So all are invited. After the bhog is offered, BK Colony brothers and sisters will be sitting. One of the brother from the Indo zone keeps cleanliness surrounding him, and therefore he will be coming today to Shantivan and will give a class. Om Shanti.
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे करता हो गुणों के भंडार। हम सब बच्चे
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे
बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। हमारे बीच फीडबैक फाउंडेशन के सीईओ भ्राता अजय सिन्हा जी और LIC HFL CSR मैनेजर मिस्टर अशोक जॉन जी पधारे हैं। देव भाई जी से निवेदन है आप भी मंच पर आएंगे, अतिथियों को मंच पर लेके आएंगे। प्यारे बाबा के घर में आपका सम्मान करेंगे। सभी भाई बहनें कृपया बैठ जाएं। ये मेहमान आपसे मिलने वाले हैं स्वच्छता अभियान के बारे में। सभी भाई बहनें, BK कॉलोनी वाले तो सभी बैठे रहेंगे। आएंगे, बैठेंगे। पूनम दीदी जी प्यारे बाबा के घर की तरफ से हमारे विशेष अतिथियों का सम्मान करेंगे। भैया ले आओ, आगे आगे ले आओ। पहले सम्मान कराओ फिर समाचार सुनवाना। सभी भाई बहनें आगे आगे आकर के बैठे। भाई बहनें सभी आगे आ जाइए, आगे स्थान खाली है। पूनम दीदी जी प्यारे बाबा के घर से हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। गोपी बहन गुलदस्ता देकर के स्वागत कर रहे हैं। आपका स्वच्छता अभियान में पूरे देश में बहुत बड़ा रोल है। प्यारे बाबा के घर से साल ओढ़ा करके पूनम दीदी जी सम्मानित कर रहे हैं।
आप यहाँ BK कॉलोनी में भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और इंदौर में स्वच्छता अभियान बड़े जोरों शोरों से आपने चलाया है। गोपी बहन प्यारे बाबा का प्रेम भेंट कर रहे हैं। देव भाई भी जाए ना साथ में, देव भाई साथ में जाइए। पूनम दीदी जी प्यारे बाबा का प्रेम भेंट कर रहे हैं। अतिथियों से निवेदन है कृपया मंच पर बैठेंगे, आप मिलना चाहेंगे। ओम शांति। आप सभी को नमन, प्रणाम, नमस्कार। हम लोग LIC हाउसिंग एंड फाइनेंस एंड फीडबैक फाउंडेशन आपके माध्यम से आबू रोड में शून्य कूड़ा का एक प्रयोग कर रहे हैं। एक साल पहले नवंबर में जब LIC ने हमें कहा कि हम कूड़ा कचरा प्रबंधन पर राजस्थान में काम करना चाहते हैं, ये वाक्य आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हम आबू रोड में आए क्यों, उद्देश्य क्या था। जब इन्होंने बताया कि हमें राजस्थान में प्रोजेक्ट करना है, फोकस राज्य हमारा राजस्थान है, मैं 8-10 जिलों में गया, सीकर में गया, चूरू में गया, उदयपुर में गया, बीकानेर में गया, और जाते जाते फिर हम पहले माउंट आबू गए थे, फिर आबू रोड गए थे। अब पूरा अध्ययन करने के बाद जो हमने प्रस्ताव LIC हाउसिंग एंड फाइनेंस को दिया, वो हमने दिया आबू रोड का और माउंट आबू का, दोनों का दिया। तो इनका अपना एक रिव्यू करने का सिस्टम है। तो पूछा गया कि यही शहर को क्यों चुना आपने, और भी बड़े बड़े शहर हैं आपके, चुन सकते थे, डूंगरपुर चुन सकते थे आप। हमने कहा कि ये एक ऐसा शहर है कि जिसमें जो संस्था जो यहाँ पर है, जो एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक जो संस्था है ब्रह्म कुमारी, ये हमें फेल होने नहीं देगी, इनका सपोर्ट मिलेगा। ये घर घर में इनको लोग पूछते हैं, घर घर में इनका पेनिट्रेशन है, घर घर में जाकर ये अपने शहर के लिए कुछ भी मांग सकते हैं। आदरणीय हैं, इन पर लोगों पर अभी भी विश्वास है, इसीलिए ये हमें डूबने नहीं देंगे। मात्र यही एक कारण था कि हमने आबू रोड को चुना। माउंट आबू भी करना चाह रहे थे, समस्या थी कि माउंट आबू में, क्योंकि वहां भी आपका हेडक्वार्टर है, लेकिन वहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिला। वहां के जो कमिश्नर महोदय ने कहा कि अब 30 किलोमीटर दूर जाकर कूड़ा को फेंके आप, हमने मना कर दिया। हमने आबू रोड को चुना। लगभग 1 साल हो गए हैं, जनवरी में स्टार्ट किया था, अभी जनवरी 1 साल हो गए हैं। मात्र 30% ही हमारा काम पूरा हुआ है। ये बात आपको बता रहे हैं मैं, क्योंकि हम आपके बदौलत यहां पर आए थे और हमें पूरा सहयोग मिल भी रहा है आपका, लेकिन आपका सहयोग बहुत बड़ा चाहिए। वो मैं बताऊंगा 2 मिनट में क्या सपोर्ट चाहिए आपका। आपका पैसा नहीं चाहिए,
हमें कुछ और चाहिए आपका सहयोग, इसलिए हम लोग आबू रोड आए थे। ये पूरा प्रयोग का था कि शुल्क आबू रोड को एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र है, एक धरोहर है। जैसे हमारा बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, वेटिकन सिटी है, जैसे मक्का है, मदीना है, वैसे ही आबू रोड है हमारे लिए। वैसे ही ये एक एक इंच जो है ये हमारे लिए पवित्र स्थान है, क्योंकि आप हैं यहां पर। तो अगर ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र है, एक धरोहर है हमारा, तो आपको लगता है ये शहर साफ है? नहीं है साफ। 40 वार्ड है यहां पर, 40 वार्ड में 20 टन कूड़ा पैदा होता है। अब 20 टन में मात्र हम 5 टन कूड़ा तक ही हम कर पा रहे हैं प्रोसेस, बस 25% ही हम पहुंचे हैं। 75% जो कूड़ा जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास आबू रोड नगर पालिका का सहयोग नहीं है। 3 बार तो ईओ चेंज हो गए वहां पर। अभी भी जो ईओ आए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं, वो एडहॉक पर आए हैं। तो कौन निर्णय लेगा यहां पर? 1 साल भी पूरा हो गया हमारा, जबकि जो आबू रोड जैसे शहर, इसके लिए 1 साल काफी था पूरा शून्य कूड़ा करने के लिए, कि जब भी कोई यहां पर आता 1 कण कूड़ा भी कहीं नहीं मिलता। अभी आप देख, अभी भी लैंडफिल साइट है, अभी भी लैंडफिल साइट जल रहा है। कल भी हम गए थे वहां पर देखने के लिए, और उसको देखने के बाद ये लगा कि हमारा काम अधूरा है। एक भी व्यक्ति अगर कूड़ा मिलाकर फेंकता है ना, वो गंदगी फैलाता है। कहते हैं नहीं, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, एक ही उल्लू काफी है। एक ऐसा मुद्दा है जहां पर साफ होना है तो सबको साफ होना है, या सब लोग गंदे रहो। ये 80% 90% नहीं चलेगा। हम 90% की ना, तब भी गंदगी दिखेगा। अब अंत में, क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है, अंत में बस 2 वाक्य कह के मैं रोकना चाहूंगा अपने आप को, कि हमें जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया, आपके बदौलत किया है। अब आप इस पूरे प्रयोग को आप टेक ओवर करें, आप इसका ब्रांड एम्बेसडर बने, कि ब्रह्म कुमारी आबू रोड का ब्रांड एम्बेसडर है। जब ये मैसेज जाएगा सभी के पास, राज्य में जाएगा, देश में जाएगा, सभी लोग जाएगा कि ब्रह्म कुमारी इज लीडिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, और ब्रह्म कुमारी आबू रोड और माउंट आबू को, आबू रोड को एक साफ शहर बनाना चाहती है। और मैं तो मानता हूं, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से मांगो तो पूरा कायनात आपको साथ देता है। इसीलिए आप सभी लोग इसको लें, इसको लीड करें, ताकि एक अगले 5-6 साल में LIG हाउसिंग एंड फाइनेंस और भी कॉर्पोरेट आ सकते हैं सहयोग देने के लिए। आबू रोड को एक ऐसा शहर बनाए कि जब लोग यहाँ पर आए तो कहे कि कैसा ये आबू रोड है, ब्रह्म कुमारी जी के नेतृत्व में कैसा काम हुआ है। लोग सिर्फ आपसे मिलने ही नहीं आए, शहर को भी देखने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय, कीमती समय देने के लिए। ओम शांति। तो जैसा अजय जी ने आप लोगों को बताया है कि हमारी एक परियोजना यहाँ पर चल रही है, मैं थोड़ा सा LIC HFL के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर ये परियोजना में फीडबैक फाउंडेशन की मदद से इस परियोजना को चला रहे हैं। आपने शायद सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं भी सुना होगा, कि कोई कंपनी जो LIC के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग होम लोन्स देते हैं लोगों को, वो इस तरीके के सामाजिक कार्य भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा मैं उस बारे में बताना चाहूँगा, फिर मैं इस परियोजना पे आता हूँ। LIC HFL और बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, उनका एक तरीके से एक कंपल्शन कह सकते हैं या ज़रूरियात कह सकते हैं कि उनको अपना जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा सामाजिक कार्य में लगाना होता है। तो ये हमारी सरकार की बहुत अच्छी एक मुहिम है, जिससे हम उन लोगों तक या उन गांवों तक, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकते हैं जहां तक सरकारें शायद ना पहुंच पाए, क्योंकि सरकारों की भी अपनी एक निश्चित या लिमिटेशन कह सकते हैं, वो जहां नहीं पहुंच पाते हैं।
तो वहाँ पर हम जैसी जो हमारी कंपनियां हैं वो आगे बढ़कर और जो फीडबैक फाउंडेशन जैसे एनजीओज हैं उनकी मदद लेकर हम अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का सामाजिक कार्यों में लगाते हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट आपका भी है। और आज की बात करें तो LIC HFL ने इस साल तकरीबन 65 करोड़ रुपए पूरे भारत देश में अलग अलग परियोजनाओं में लगाए हैं, जिसमें से एक ग्रीन टुमारो प्रोजेक्ट जो हमारा अभी प्रोजेक्ट आबू रोड में आपके साथ हम कर रहे हैं वो भी है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट यानी कि गाँव के विकास के लिए हम कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से स्कॉलरशिप का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। और ये एक ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही अनमोल प्रोजेक्ट है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है, कूड़ा प्रबंधन। और ये जो प्रयास था ये LIC HFL के लिए भी बड़ा नया प्रयास था, क्योंकि शुरुआत में जब अजय जी जैसे बता रहे थे LIC HFL को भी नहीं पता था कि ये परियोजना को कैसे हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारी भी जो नॉलेज थी वो बड़ी ही लिमिटेड थी। लेकिन फीडबैक फाउंडेशन का सहयोग अच्छा रहा। हम चाहते थे कि राजस्थान में करें, तो कई शहर आए दिमाग में, जयपुर भी था, जोधपुर भी था, कोटा भी हो सकता था, लेकिन हमने आबू रोड को इसलिए चुना, जैसे अजय जी ने बताया, कि यहाँ पर ये आबू रोड जो जाना जाता है वो बेशक माउंट आबू की वजह से जाना जाता है, लेकिन ब्रह्म कुमारीज की वजह से बहुत ज़्यादा अब जाना जाने लगा है। और यहाँ पर आपका रोल बड़ा क्रूशल आ जाता है कि लोगों का सहयोग आपसे बहुत ज़्यादा है, और आपका जो प्रभाव इस पूरे शहर, प्रदेश या पूरे देश और दुनिया में है, वो इस परियोजना को और आगे लेके जाएगा। और जब मैं शुरुआत में जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पिछले साल, तो बड़ी तकलीफ हुई थी, और मुझे यहाँ तक कह दिया गया था कि सर यहाँ तो शायद मुमकिन नहीं है, आबू रोड हमें चेंज करना पड़ेगा, कोई दूसरा शहर देखना पड़ेगा। और ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ से गया था, तो मुझे टेंशन थी कि अब मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और हमारी बोर्ड ने इसको स्वीकृति दे दी है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन फीडबैक फाउंडेशन की तरफ से आया था कि सर ये सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है, ना ही म्यूनसिपैलिटी दे रही है, तो हम चाहते हैं कि शिफ्ट करें। लेकिन जैसा कि सर बोल रहे थे कि अगर आप में शिद्दत है काम करने की और आप में एक जुनून है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई, और ईश्वर की कृपा है और आप लोगों का सहयोग है कि हम इस परियोजना को उस मुकाम तक 1 साल में ला चुके हैं। भले ही अभी 30% काम हुआ है, जैसे अजय जी बता रहे हैं आपको, लेकिन हम इसको 100% तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने में आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए आपसे बस एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। मेरी आशा है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को अब टेकअप करें। 1 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि आने वाले साल में LIC HFL हो सकता है कि ये परियोजना छोड़ के अब आगे चली जाए, कहीं दूसरे प्रदेश में, दूसरे शहरों में जाए। फीडबैक फाउंडेशन भी हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में अपना काम शुरू करें। लेकिन जो समाज है और जो सामाजिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इस शहर का ब्रह्म कुमारी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी इसमें और ज़्यादा बढ़ती है कि आप इस परियोजना को आगे लेके जाएं। और जो हमारा जो MRF जो बना है, और भी हम चाह रहे हैं कि और MRFs बने यहाँ पर, जहाँ पे कूड़ा लेके आया जाए और उसको प्रोसेस किया जाए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग इसको आगे लेके जाएं और इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाएं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें और हमारे प्रोजेक्ट को अब अपना प्रोजेक्ट समझ के इसमें काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी, सिन्हा साहब का और जॉन साहब का, थैंक यू सो मच।